What a wonderful world. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mansi and I create content related to beauty, fashion and lifestyle. If you are interested in all sort of a genre, please do consider subscribe to my channel. आज का वीडियो होने वाला है very huge AJIO Shoe Haul. Yes, recently मैंने काफ़ी ज़्यादा AJIO से शू शॉपिंग की है. मैंने उस पर सैंडल, ब्लॉक हील्स, पेंसिल हील्स एंड गॉड नोज व्हाट. So I have tried all sort of a trendy stuff. So if you're interested what did I shop from AJIO, let's get into the video. The first pair which I got is a pencil heel, guys. Yes, I wanted to try the pencil heel for the longest time, but I did not know kahan se loo. So I was like, AJIO is the best site to buy any sort of a heels. So I got this one. This is in this black, basic black. You know, आपको black heels होना बहुत ज़रूरी है. आपको black heels never ending purchase होता है. That's why I got it in the basic black. You can see यहाँ पे 3.5 इंच का pencil heel you get. It is looking very nice and very casual and simple and yet elegant. इसका जो strap detailing है वो बहुत ज़्यादा classic लग रहा है मुझे. मेरे feet पे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है ये वाला. I do not expect this good quality from AJIO, but I know now it is a very good quality. It is very sustainable. You can use this for the long period of time if you are comfortable with this kind of heels. I got this for approximately 70% off. So I am not sure exactly इसका price MRP क्या होगा. I will mention it on the screen. You can see मैं बहुत अच्छे से इस पे वॉक कर सकती हूँ for the longest time. You can definitely grab this out and this design specifically I like this kind of dainty delicate design on my feet, so that's why I got this one first. Next up I got a nude block heel. Block heels are the most comfortable heels. If you're starting out with heels, you should definitely invest in a block heels which is not height of 3 inch or 3.5 inch max. The one which I got from the AJIO is this one, guys. This is in the shade nude. न्यूड हील्स का वही कमाल है, वो हर एक चीज़ पे चले जाता है, बीट इंडियन, वेस्टर्न और एनी सॉर्ट ऑफ वेयर. यू कैन सी उसका डिज़ाइन एंड इसका डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट दिस इज इन मोर ऑफ अ लेस सैटिन फिनिश. थोड़ा इसका मटेरियल कम चमकीला है आई वुड से, बट यू कैन सी इसका हिल साइज इज 3.5 इंच अप्रॉक्सीमेटली. ट्रैपी डिटेलिंग इज एज ऑलमोस्ट सिमिलर विद द ब्लैक वन विच आई हैव शोन प्रीवियसली, but this is in the nude color and the heel is different. This is a box heel and that one was the pointy ones, so that's the difference. But I really like it. I'm more comfortable with this heel than that one. आप देख सकते हो मेरे पैरों पे ये कैसे लग रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल है. एंड न्यूड हील्स आपके पैरों को बहुत इन्हांस कर देता है, आपके फीट को बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई कर देता है समहाउ. आई रियली लाइक इट. आप अगर फर्स्ट टाइम हील ले रहे हो एंड आपके पास कोई भी न्यूड हील नहीं है, definitely grab this one. Next up I got a white heels. I always on a hunt of a nude heels or a white heels because ये दो ऐसे कलर्स है ना जो आपको कोई भी आउटफिट पे इजीली कैरी कर सकते हो, आपको बिल्कुल मैच करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ वाई आई गॉट दिस वन. दिस इज़ इन द पॉइंटेड हील ओनली, बट ये 2 इंच का हील है. इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल देन द वन विच आई हैव शोन प्रीवियसली इन टर्म्स ऑफ पॉइंटेड हील्स. ये क्रॉस डिज़ाइन में है. ये इसका मटेरियल प्लास्टिक है, बट ये वाला मटेरियल पीयू लेदर है. बहुत कंफर्टेबल है. यू कैन सी बहुत ही प्रिटी लग रहा है. ये मेरे पैरों को इलोंगेट कर रहा है, बहुत लंबे लग रहे हैं मेरे पैर समहाउ. आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन और बिकॉज ऑफ द कलर. बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये वाला पर्टिकुलर पेयर ऑन माई लेग्स. आप वाइट हील्स हमेशा आपके कलेक्शन में होनी ही चाहिए. This I will say for all the colors maybe, but yeah, nude and white should be in your collection, also the black. These 3 colors you should have. That's why I got this one. ये भी मुझे almost 70% off पे पड़ गया था, guys. This is from their own brand AJIO. You should definitely grab this. Got a yellow heel. It's not a very huge heel, but it's a kitten heel. The one which I'm talking about, this one, guys, this is how it looks like. You can see ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. आगे से you get this pointy detailing sort of a thing. It looks really pretty. आप देख सकते हो इसका heel size is a very छोटू सा. That's why it is called as a kitten heel. If you are looking for and if you're starting off with the pointed heels, start with the kitten heels.
आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अगर आप इसको आगे हील साइज बढ़ाना चाहते हो. बट आई थिंक इट्स अ मच मोर कंफर्टेबल हील. इसका भी डिज़ाइन बहुत ही अलग सा एंड काफ़ी ट्रेंडी लगा मुझे. यू गेट दिस वन स्ट्रैप एंड देन यू गेट दिस क्रिस क्रॉस डिजाइनिंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आपको यहाँ पे टो पे यू गेट दिस pointy thing which really looks very very classy and elegant. That is the reason I got it. आपको हर हील्स में बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ द कलर्स अवेलेबल है अजियो पे. डेफिनेटली पिक एंड चूज एज पर योर लाइकिंग. आई डू नॉट हैव समथिंग लाइक दिस इन माई कलेक्शन. लाइक ये येलो मस्टर्ड येलो कलर बहुत क्लासी लग रहा था. दैट इज वाई आई गॉट दिस वन. The next block heel I got is in again nude, guys. Yes, I'm a crazy like that. You can call it whatever you want, but this is the one which I got. You can see it's so different than what I have previously ordered. The one which I have previously ordered in the nude is a simple strappy design. यहाँ पे आपको बहुत ही chunky strap design with this buckle detailing you get. ये आपको यहाँ पे block heel मिल जाएगा. ये 3 इंच 3.5 इंच का है and the design is quite nice. You can see ये buckle designing है and then you can easily slip on it. You get the cushion detailing over here which is really comforting. आप इसको बहुत आराम से 7 to 8 hours wear कर सकते हो. You will not hurt your leg at all. मैंने इसको with this kind of heels you can definitely walk around for 7 to 8 hours if you have a practice of wearing heels. अगर आप newcomer हो in terms of heels, do get this one. It's really classy piece and you get a tons of color in this. Next pair which I got is in gold, guys, because you want to wear any sort of a traditional outfit, उसमें कहीं ना कहीं गोल्ड का काम गोल्ड का वर्क होता ही है. So you want something which will go with all sort of a traditional outfit for wedding, function or festive day. So that's why I got this one. This is how it looks like. This is another box hill situation, guys. You can see यहाँ पे पूरा जूट का काम करा हुआ है. ये पैर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे. आई कैन लिटरली वेयर दिस फॉर फुल डे एंड आई वोंट कंप्लेन एट ऑल. ये इसका कुशनिंग मटेरियल है यहाँ पे यू गेट एंड यू गेट अ गुड क्वालिटी हील. बहुत अच्छा हील है एंड बिकॉज आई गॉट दिस जूट दैट इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. बिकॉज कोई भी गोल्ड कलर गोल्ड सैंडल में यूजुअली यू गेट अ स्टोन वर्क और स्टोन डिज़ाइन एंड समथिंग लाइक दैट. उसमें हमारे कोई भी कपड़े जो हमने पहने होते हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं एंड दैट गेट्स मेसी डे बाय डे. सो उससे अच्छा हम कोई भी प्लेन गोल्ड हील ले जो कि क्लासी एंड एलिगेंट हो, जैसे ये वाला मुझे मिल गया. You can definitely rock this up and you can definitely feel very comfortable with all sort of jewelry and accessories which you are wearing. You need a very comfortable heel with that. That's why I got this one. आप देख सकते हो बहुत सिंपल है, बहुत एलिगेंट है, बट इट इज लास्ट 2 to 3 pairs which I got is a very trending and very experimental pairs in terms of me at least. मैंने कभी इतने experimental pairs नहीं देखे, बट मैंने ये ऐसे सारे pairs H&M में एंड ज़ारा में, स्पेसिफिकली ज़ारा में बहुत देखे हैं. द वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस वन. यू कैन सी ये बहुत ट्रेंडिंग था काफ़ी टाइम पहले, बट यू डू गेट सेम वन फॉर 2 to 3,000 in Zara and you getting the same thing for 800-700 bucks in AJIO. You can literally get it for 1/4 of the price. This is a very casual piece but it looks really elegant if you are wearing a basic black dress and if you are pairing with this, the dress will literally pop it up. You get this in a block heel which is super comfortable. आप parties के लिए, night outs के लिए बिल्कुल पहन सकते हो. And then you get this crisscross detailing all over. You get a cushioning as well which is the plus. I really love this pair. I think इसमें एक से I think 10 to 9 different colors are available, but I got this black and white because I wanted to start with something super casual. At the same time it's super trendy. You can definitely grab whatever color suits you. I got this one. Second last pair which I got is a transparent pair. Transparent heels are so much in, guys, because transparent heel को कोई color नहीं होता and you can definitely wear it with anything and everything. The one which I got is this one, guys. This is how it looks like. You get a super solid transparent heel. I was gonna say the plastic one, but though it is a transparent heel, ये बहुत ज़्यादा sturdy है. It is a little heighted than I usually wear. It is a 4-inch heel, but you do get something like this. ये आगे से पूरा थोड़ा narrow वाला detailing है, but it is extremely good. You can definitely grab this. आप
यू कैन डेफिनेटली वेयर इट विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपको कोई टेंशन नहीं है मैच करने का. दैट्स द रीज़न इट्स सुपर इन एट द मोमेंट. आप बहुत सारे H&M ज़ारा पे ये वाला पेयर आपको अराउंड 2000-3000 पे मिल जाएगा, बट आई गॉट दिस फॉर $800 गाइज. जो कि बहुत ही ज़्यादा सही डील है, आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो ये वाला पेयर. The last pair which I got from AJIO guys is super experimental. I literally put it in the cart in the last moment. The one which I'm talking about is this one guys. You can see a literally flash मारा है, इतना neon pink है. I was not expecting it to be this neon pink, but I'm super happy. I will really style this up on my Instagram. You can follow me there. This is my handle, but you can see it is again in the blockade. ये बिल्कुल neon है. This is from the brand Ever Cupid. This is one of the AJIO's own brand, I believe. I did got the one which I showed you before, the transparent one from the same brand. That is, and this one is from only Ever Cupid. आई रियली लाइक दिस वन. यहाँ पे आपको कुशनिंग थोड़ी कम है, बट इसका ब्लॉक हील का साइज भी बहुत ज़्यादा कम है. दिस इज 2 इंच विच इज सुपर कम्फर्टेबल, बट द कलर इज टू डाई फॉर. दिस सॉर्ट ऑफ अ कलर, द नियॉन कलर, दिस कलर इज इन सुपर ट्रेंड. You can definitely grab this if you want to get a trendy stuff and you don't know the trend is gonna last, because it's not a classic. You should not invest it in 2000-3000 a pair. You should definitely grab something like this from the AJIO, because you can use them as per the trend and then you can just keep them back off in your shoe closet and you can wear them when the trend comes back. Neon trend is definitely back guys. बहुत सारे लोग neon के shoes and clothes use कर रहे हैं. You can definitely grab this up. You do get a neon yellow, green and all sort of a color in this particular pair. That's it for this video guys. I hope you like all my shoe collection which I recently bought. If you like the video, please give this a thumbs up. Comment down below what you want me to do next. Until I see you next time. Bye guys.